नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलते हैं अवार्ड विनिंग आर्किटेक्ट और फोटोग्राफर सचिन वकारे, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की लाइफस्टाइल और ऑस्ट्रेलिया के लाइफस्टाइल में क्या अलग है। चलो चलते हैं ऑनलाइन मीट पे सचिन जी से। हाय सचिन। Hi Rajesh. So, first of all, I would like to understand कि वहाँ क्या प्रैक्टिस कर रहे हो सचिन। आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस, आपको फोटोग्राफी का भी शौक था, तो कैसे कर रहे हो काम, वो जानना चाहेंगे। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे अराउंड 20 इयर्स, मतलब 20 साल हो गए अभी। तो जब आया था तो ऑब्वियसली एक यंग स्टूडेंट था, मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहा था। तो तब आई वर्क इन, मतलब आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में ही मैंने शुरुआत की मेरे करियर की इन ऑस्ट्रेलिया। और फिर वो छोटे प्रैक्टिस में था मैं, फिर वहां से मैं एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस में काम करने लगा, जिन्होंने बेजिंग का ओलंपिक का वाटर क्यूब वगैरह डिजाइन किया है। सो बेसिकली बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो वहां से फिर देन पिछले अराउंड 7 to 10 इयर्स मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ, तो उसमें काम कर रहे हैं हम। तो बेसिकली हमारा जो अभी करंटली हमारे प्रैक्टिस में अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें हम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हेल्थ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सारे क्लाइंटल है हमारे पास। तो वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसका मे बी बजट $500,000 हो टू मे बी अराउंड $150 to $200 million का प्रोजेक्ट हॉस्पिटल हो। तो बेसिकली वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स है हमारे पास अभी। तो वी आर वर्किंग ऑन अ लार्जर। So what is your firm called? Your firm's name? NJ. We practice under the name of NJ. Okay. NJ. Okay. So what about the passion in photography? वो कहाँ तक गया? Photography, like I always say, I'm an architect by profession and a photographer by passion. तो passion तो है, चल रहा है। I enjoy astrophotography because I'm an architect, तो वो architectural photography भी करता हूँ। But ongoing, it's a very less part of what I do। जो photography में वो professional photography है। Most of my photography is hobby and sometimes I do charity, मतलब लोगों को ऑफर करता हूँ मेरी सर्विसेज एट नो कॉस्ट। सचिन, अभी 2 डेकेड हो गए आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो थोड़ा सा अपने जो यंग स्टूडेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, जिन्हें मास्टर्स करने जाना है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th करके सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ही आर्किटेक्चर करेंगे, उन दोनों के लिए थोड़ा सा आप एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे वो आ सकते हैं वहां और क्या अपॉर्चुनिटीज है ऑस्ट्रेलिया में। देखो, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल जो ऑफर करता है ऑस्ट्रेलिया। बैलेंस, बेसिकली लाइफस्टाइल बैलेंस जिसे कहते हैं, वर्क लाइफ का बैलेंस, वो बहुत अच्छा है। तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया काफी लोग आना चाहते हैं। उसी वजह से शायद मैं 20 साल पहले आया, राइट। तो वो डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है ऑस्ट्रेलिया में वेयर यू कैन कम एंड मतलब मास्टर्स डिग्री के लिए आ सकते हो। और जहां तक आपका सवाल है कि वेयर यू कैन कम आफ्टर HSC, लुक, मतलब मुझे खुद यूनी किए हुए 25 साल हो गए, तो आई मे नॉट बी इन टच विद व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन, बट आई एम ऑलमोस्ट 99% श्योर कि आफ्टर HSC also you can come to Australia and directly join bachelor's. So your 12th degree in India would be considered there कि आप 12th HSC किया है and you can join bachelor's. Yes. What about the architectural degree or council certificate? Is that considered there valid? Architectural degree, our Indian degree. Yeah, of course, yes, it is considered equivalent. और वही था, मतलब as you know, you and I, we both from Mumbai University, right, graduate. So my degree from Mumbai University was considered equivalent to Australian or international curriculum. तो वो assessment होता है और उसके बाद they think it's they basically give you a green tick कि yes, equivalent. Can practice as an architect there. No. So, okay, there's a big difference. So basically your degree is considered, so you can work in an architectural practice,
But the big difference in Australia and India is, for example, I'll tell you very quickly and clearly. इंडिया में आर्किटेक्चर डिग्री खत्म होने के बाद यू हैव टू अप्लाई टू काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया. वहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली मिल जाता है आफ्टर यू अप्लाई टू देम, बिकॉज यू हैव डन 5 years का बैचलर्स, तो आपको मिल जाता है. ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है. तो बेसिकली इवन दो योर डिग्री इज इक्विवेलेंट एंड ऑल दैट, बट यू स्टिल हैव टू गो थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसे मतलब इट इज क्वाइट एन इंटेंसिव प्रोसेस, जो किसी को 1 साल में कोई कर सकता है. somebody might take 3-4 years to finish that process. It depends how much you invest, how much time you invest into that process. तो बेसिकली होता क्या है कि रिटन एग्जाम्स होती है, इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर रिटन एग्जाम होती है. रिटन एग्जाम काफी टीडियस प्रोसेस होता है, बिकॉज वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है. सो दे मेक एवरीथिंग, दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक श्योर यू फेल, राइट, द रिटन एग्जाम. Of your written exam, when you clear the written exam, then there's another logbooks hote hai. Then you have to show that you have, say, 2 years of working experience in Australia, and then you have to give another final interview, where the final interview is always practicing architects hote hai field mein, wo interview lete hain, and they make sure that you're all rounded personality, where once you're given the, basically you clear the exam and the interview, आप अगले दिन से मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन आ जाता है, you can call yourself an architect. तभी आप you can use the term architect by law. Until then you are only an architectural graduate or a technician, architectural technician. The word architect is taken quite seriously in Australia. तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप यूज कर सकते हो कि yes, I am an architect. वन क्विक क्वेश्चन अबाउट स्टूडेंट्स ओनली, कि जब वो यहाँ पे सीखने आते हैं, से एमआर्च करने आते हैं, सो दे कैन दे अर्न साइमल्टेनियसली? इज द पेरोल ओके? इज देयर वैकेंसीज लाइक दैट? Yeah, so basically international students के लिए I am not sure about the latest law or rules जो है students के लिए, but back in those days 20 hours होता था, 20 hours a week they can work. So yes, sure, they can work in an architectural practice if they get that break. Okay, and how is the payroll for an architect there? यहाँ से जब वो ग्रेजुएशन करते हैं या फिर मास्टर्स करके जाते हैं, so how is the salary package there? Architectural, it is quite varied. अगर हम आज की बात करें तो यंग आर्किटेक्ट जो होता है, he can with minimal experience, basically, if he gets a job in an architectural practice, where I think he can, if he knows, if he's got the right skills, for example, जो tools use करने आते हैं. In Australia, very few practices use AutoCAD. Everybody uses Revit. So let's say that candidate को, मतलब student को अच्छी mastery है सॉफ्टवेयर की, तो his or her chances are much higher. तो फिर package can maybe starting 50, 60, 70K per, मतलब 70,000 Australian dollars per annum का package. That's a rough indication. Obviously it depends on economy कैसी है, but that could be a good starting point. Now let us come towards the drawings and approval part. What you do? जैसे इंडिया में प्लॉट लेते हैं, डेवलपर्स आते हैं आर्किटेक्ट के पास, फिर हम उसे उस रूल्स में, बायलॉज में बिठाते हैं, एंड वी ट्राई टू कंज्यूम एफएसआई. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एफएसआई देयर इन मेजर सिटीज, एंड what is the approval process? हमारे यहाँ अभी भी, I'll just give, क्योंकि आप 20 साल से नहीं हो इंडिया में, अभी ऑनलाइन अप्रूवल चालू हुआ है. मींस ड्राइंग ऑटो डीसीआर से हमारा म्युनिसिपल काउंसिल में जाता है, लेकिन फिजिकल कॉपीज और पेपर वर्क अभी तक पूरी तरह रुका नहीं है. दैट ऑल्सो गोज साइमल्टेनियसली. ओनली डिजिटल सिग्नेचर एक हुआ है, एंड ड्राइंग करेक्शन वो ऑटो डीसीआर पे होता है अभी तक. बट इट टेक्स टाइम, अबाउट 3 to 8 months it takes for an approval. So what is the situation there for an approval of residential building? So you'll be happy to know कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आगे नहीं है आपसे. So I think we got paperless only about maybe 5 years ago.
So until maybe 5 years ago, we used to, send hard copies to council. So basically, similar concept है, ज़्यादा difference नहीं है, but I'll still pinpoint on the major differences, right? तो similar, a developer has got a site, तो वो developer हमें approach करता है, then we do a feasibility study. Feasibility study में हम we tell him roughly that let's say that we'll take an example of apartment project, which is probably a common example in both countries, right? तो वो example से कि हम बता सकते हैं कि look, roughly 100 apartments हम इस site पे roughly we can plan that much, and that is the your yield, जिसको हम लोग yield बोलते हैं, तो yield उतना है. तो then they say okay, let's do a pre-DA. तो हम लोग DA डेवलपमेंट एप्लीकेशन जो हम लोग लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट काउंसिल में, उसको DA बोलते हैं, डेवलपमेंट एप्लीकेशन, तो शॉर्ट फॉर्म DA. तो हम लोग प्री DA भी करते हैं, मतलब डेवलपमेंट एप्लीकेशन के पहले ही हम लोग थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डिजाइन जो होता है, जिसे लेके हम क्लाइंट और प्लानर, हम 3 पार्टीज काउंसिल को मिलते हैं, उनसे अपना एक जस्ट टू टेस्ट द वाटर, बेसिकली कैसे रिसीव करने वाले हैं. And then pre-DA के बाद then we work on the full design, और फिर then we have a raft of consultants, मतलब बहुत सारे landscape architect आ गए, energy consultant आ गए, sustainability जिसे बोलते हैं, तो काफी सारे consultant बाद में आ जाते हैं. Then we prepare the full package and then we launch a DA. और आज मतलब इन टुडेज डे एंड टाइम ऑस्ट्रेलिया में एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो ऑनलाइन पोर्टल में हम लोग लॉन्च करते हैं सारे सॉफ्ट कॉपीज, हार्ड कॉपीज टोटली नॉट एंटरटेन्ड एट ऑल. मतलब आप जा ही नहीं सकते काउंसिल में विद हार्ड कॉपी एंड लॉन्च इट. सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन. और फिर एंड दिस इज मेरी कमेंट्री जनरली जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उससे ज्यादा रेलेवेंट है. देयर माइट बी 1 or 2 स्टेट्स वेयर हार्ड कॉपीज माइट स्टिल बी एक्सेप्टेड, बट न्यू साउथ वेल्स जो मेन लाइक सिडनी, जहाँ जो शहर, तो बेसिकली वहां पे ऐसा है. एंड देन वंस इट्स लॉन्च्ड, इट मे टेक 6 months, 9 months, 1 year. It depends. Like it depends how complex the project is, and if it's a house, it's obviously, if it's a single house, it's much more faster. But for approval, yes. So, for example, you said that Mumbai में आपको 9 महीने भी लग सकते हैं, so it's no different. It's not like इतना ही time frame. Okay, then what is the current FSI in Australia? There is no same जिसे इंडिया में आप FSI कहते हो, हम ऑलमोस्ट सिमिलर टर्मिनोलॉजी, हम लोग FSR कहते हैं, फ्लोर स्पेस रेशियो. तो इट इज नॉट सेम. इवन इट कैन डिफर फ्रॉम विद इन द सबर्ब, इट कैन डिफर कि यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है. तो वो आपका जोनिंग पे होता है. तो जो आपकी जोनिंग है, लैंड की जोनिंग, तो वो लेजिस्लेशन के हिसाब से करना पड़ता है. तो फॉर आई गिव यू जस्ट अ क्विक, जस्ट टू गेट, आपको थोड़ा आइडिया आएगा. तो अगर हम CBDs में जाए, जो मेन डाउनटाउन जिसे बोलते हैं, वहां पे FSI हमेशा हाई होता है. कभी कभी 10:1 भी हो सकता है, 5:1, 10:1. तो देयर यू कैन बिल्ड हाई राइजेस जो डाउनटाउन में होता है. बट अगर थोड़े सबर्बन एरियाज में आए, तो वहां पे FSR 1:1 हो सकता है. हाउसेस का जनरली 0.5:1 होता है, मतलब ओनली हाफ. So that's just a thumb rule, but like I said, very good. And that depends on individual municipal councils there. मतलब हमारे यहाँ तो municipal councils of say Kalyan Dombivli is different, Thana is different. So आपके यहाँ how is that? Correct. It depends. Correct. Okay. So how do you take care? There is 2 aspects. One is approval drawing and the other is design drawing. So we also have sometimes 2 consultants for them. Generally design consultant is different and here approval consultant is different. So what about that design aspect of the building? Okay, so basically that concept, वो concept इंडिया में ही ज्यादा prevalent है, यहाँ पे है नहीं. हम लोग
एवरीथिंग इज डन अंडर आवर अम्ब्रेला बेसिकली. हम ही डिजाइन आर्किटेक्ट्स हैं और हम ही वो जो काउंसिल में लॉन्च होते हैं वो प्लान्स वो सबमिट करते हैं. एंड आई डोंट नो नाउ व्हाट हैपेंस इन मुंबई और इन इंडिया, बट मुझे याद है जब 20 साल पहले मैं जब मतलब मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा था तो म्युनिसिपल ड्राइंग्स अलग दिखते हैं, डिजाइन ड्राइंग्स अलग दिखते हैं. वैसे कुछ that has you'd be happy to understand now. ये आज से 8-7-8 साल पहले म्युनिसिपल अथॉरिटीज रियलाइज दिस कि ये हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्लावर बालकनीज एंड एवरीथिंग एंड अदर एफएसआई का जो चोरी होता था अब सब बंद हो गया है. दे हैव कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फंजिबल एफएसआई जिसमें जितना भी पेरिफेरी है सब एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड इन एफएसआई. सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दे आर रियली स्ट्रिक्ट. सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता. Fantastic. Okay, that's excellent. Good news. Okay. So now let's come about the structural system. अभी भी यहाँ पे RCC system है जो of designing and we have means load bearing के लिए सिर्फ walls are used as partitions. तो वहाँ steel है कि RCC is used? What is there? This is a very deep subject and we can have a 1 hour podcast just on talking about the material differences, right? So this is really where both countries are going to be totally different. लेकिन to answer your question in a very simplistic manner कि हाँ यहाँ पे भी है मतलब अगर residential buildings का example है तो yes RCC construction जो इंडिया में RCC term use करते हैं वो methodology यहाँ पे भी है. यहाँ पे स्टील हाई राइजेस मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे भी हम लोगों ने काम किया है वेयर कॉलम्स एंड बीम्स एंड एवरीथिंग इज बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर. जो शॉप ड्राइंग्स आते हैं हम रिव्यू करते हैं एंड देन वी वर्क अराउंड सो वी डिटेल अराउंड स्टील. तो डिटेलिंग अलग होती है बिल्डिंग्स की. यहाँ पे एक्सटर्नल फैब्रिक जो कहते हैं वो काफी stringent होता है basically against waterproofing, fire properties, everything basically. तो थोड़ा difference है मतलब even though it's an RCC थोड़ा difference है, but in terms of materials and the way the detailing happens in Australia is lot more than what I'm used to doing when I was back then in India. Again, you could correct me. Maybe in India also, people do a lot of detailed drawings, but here in Australia we have, like for example, I'll give you an example. Like we're currently working on a project which is probably only 100 apartments, which is very small for a project in India, right? But for that one project, we have about 500 to 600 drawings. My God. Just for that. So it's fairly. So these drawings are for different consultants, say, as you told, energy conservation, say. Just architectural package. This is just architectural package. Consultants might have another, structural engineer might have another 200 drawings. A mechanical guy might have 50 drawings. Electrical guy might have another 50 drawings. So the for a project of that scale, again, maybe for Sydney 100 apartment project is like a small, medium, decent sized project. But for India, maybe it's a very small project. Lekin the amount of documentation that happens for a project is huge. Okay. That's all I'm. And now coming to the interiors part, India में generally जो plain खोखा बोलते हैं, you take फ्लोरिंग देता है जो डेवलपर होता है, आजकल किचन काउंटर देता है, बस दैट्स इट, एंड देन यू डू इंटीरियर्स. जनरली द रेशियो ऑफ इंटीरियर्स समटाइम्स वेरी टू 20% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट टू इवन 100% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट. कभी कभी ज्यादा भी करते हैं लोग, करोड़ों भी लगा रहे हैं इंटीरियर्स में. सो व्हाट इन ऑस्ट्रेलिया क्या ट्रेंड है? Okay, so this is where there is a big difference. दोनों कंट्रीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है. जनरली अपार्टमेंट्स जब मिलती है ना तो यहाँ पे तो फुली फिनिश्ड मिलती है. आपको सिर्फ आपका फर्नीचर लाना होता है, दैट्स इट. और अगर आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज टेस्ट देना हो तो किसी फीचर वॉल को आप बिफोर यू मूव इन आप फीचर वॉल कलर कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो. बट अपार्टमेंट जनरली ट्रेंड ये है कि पूरा फिनिश्ड, किचन इज कंप्लीटली फिनिश्ड, bathrooms are completely finished,
laundry is completely finished, and bedrooms and basically it's finished. You just have to, बट आपको सिर्फ फर्नीचर लेके आना है और आपके बैग्स लेके आना है. जैसे यहाँ इंटीरियर डिजाइनर और पूरा कॉन्ट्रैक्टर टीम जाता है और फ्रॉम एंड टू फुल कंप्लीट करता है, फॉल सीलिंग जैसे करते हैं, या वैसा कुछ ट्रेंड है? Everything is done. You basically get the keys of your brand new house. आपको सिर्फ Only आपका loose सामान furniture लाना लेके है आना, and बस, that is it. लूज फर्नीचर, जॉइनरी, बिकॉज यहाँ पे जॉइनरी और फर्नीचर में बड़ा डिफरेंस. फर्नीचर इज अ लूज आइटम, जॉइनरी इज समथिंग दैट इज फिक्स. एंड so basically kitchen cupboards हो गए joinery. That's not called, that is not furniture. Furniture and a sofa, lounge. So the modular kitchen is given by the developer, you mean to say? सब कुछ it's done. Since you are there for 20 years, so you might have even seen the evolution, the way transition in last 20 years in Australia as well, in architectural terms, in design terms. So I just wanted to know, or we were just curious, कि मुंबई में आपको मतलब छोटे घर, झुग्गी झोपड़ियों से लेके, जैसे धारावी एशिया का सबसे बड़ा वी हैव इट हियर, से लेके बाजू में ही यू हैव हाई राइज बिल्डिंग जिनमें 8-9 करोड़ का एक फ्लैट है. सो ये जो वेरिएशन विद इन हाफ ए किलोमीटर रेडियस में है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे है, या लाइफस्टाइल कैसे है, बंगलोज कैसे हैं या अपार्टमेंट्स, व्हाट डू पीपल रियली प्रेफर टू स्टे इन? Okay, so that's an excellent question actually. ये जो है ना, जो इंडिया में दिखाई देता है, उसे मतलब एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट जिससे कहते हैं, कि आपको जुहू में जाएंगे तो जुहू में यू कैन लिव इन अ 5-star होटल और उसी विंडो से आपको स्लम दिखाई देती है. एंड वो बिकॉज यू एंड आई ग्रू अप इन मुंबई, हमें पता चलता है. बट आई नेवर रियलाइज कि हाउ बिग अ क्वेश्चन मार्क इट इज व्हेन माय डॉटर सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम. How is it possible that people live in such a big contrast? They cannot digest that fact कि इतना बड़ा contrast कैसे है. तो to give you a simple answer, वैसे है नहीं contrast यहाँ पे. Generally, yes, there are extremely affluent suburbs जहाँ पे $50 million के घर है, but contrast इतना है नहीं. मतलब generally it is no comparisons to जो आपने एग्जांपल दिया उसका कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे. जनरली लाइफस्टाइल इज प्रीटी बैलेंस्ड और इक्वल. तो मिनिमम साइज ऑफ ड्वेलिंग क्या होता है अपार्टमेंट का वहाँ? आई विल गिव यू जो बेसिक जो होता है ना कोड्स में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल 55 स्क्वायर मीटर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मेट्रिक मतलब मीटर स्क्वायर में ही बात करते हैं. तो 55 मीटर स्क्वायर में 1 बेडरूम मिनिमम होना चाहिए. तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है, मैक्सिमम के स्टैंडर्ड्स नहीं है. मैक्सिमम डेवलपर को अगर एक्सट्रीमली लैविश प्रोजेक्ट बनाना है तो कर सकता है, बट मिनिमम के स्टैंडर्ड्स है. 2 बेडरूम 2 बाथरूम का अपार्टमेंट होगा तो 75 स्क्वायर मीटर मिनिमम होना चाहिए. 3 बेडरूम 2 बाथरूम का अपार्टमेंट है तो मिनिमम 95 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. तो दीज आर द गाइडलाइंस, जो मिनिमम गाइडलाइंस है. मैक्सिमम तो खैर यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. सो आई जस्ट वांटेड टू नो सचिन नाउ कि इफ एन यंग फैमिली और न्यूली मैरिड कपल वांट्स टू कम डाउन टू ऑस्ट्रेलिया, इज ऑस्ट्रेलिया ए गुड ऑप्शन, और कनाडा जो पंजाबियों का दूसरा पंजाब है, या मे बी अमेरिका विच इज अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट, तो आप बताओ क्या अच्छा है? I think it's a very personal question, but I'll still try to give my answer because वेदर एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो बहुत अट्रैक्टिव है. आई नो सो मेनी पीपल जो जर्मनी से माइग्रेट हुए, जो यूके से माइग्रेट हुए, इवन अमेरिकन जो को जानता हूँ जो माइग्रेट हुए. तो वेदर ऑस्ट्रेलिया का आई वुड से, आई मीन आई कुड बी बायस्ड, बट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग द कंट्रीज दैट यू मेंशन्ड. ठीक है,
बट जिसे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसे आई गेस जाना चाहिए. किसी किसी की फैमिलीज होती है तो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस टू बी ऑनेस्ट. बट if you want to pick between the countries that you mentioned, having lived in Australia for 20 years and having no regrets, I would certainly say Australia is probably would be my pick anytime. Like you mentioned amongst about the countries weather, you mentioned. so I would like to understand how different is it with India, matlab, just comparing both. देखो वेदर it is, you can say कि extreme hot or cold, मतलब जो because I will again compare it not with Kashmir for example. I'll compare with Mumbai, right, where I come. तो इतना ह्यूमिड नहीं है जितना मुंबई में है. जनरली आई गेस द बिग टिकट आइटम जो जिसे बोलते हैं वो है क्लीन एयर, नो पोल्यूशन. That's it really. But in summers it can get really hot some days, and in winter it is it depends where in Australia. Like if you are in the eastern coast like Brisbane or Sydney, that belt, I think it's pretty it's fantastic in terms of weather. Fantastic. जैसे इंडिया में 3 महीना तो फुल रेन होता है वैसा, एटलीस्ट इन मुंबई. We don't have that season here in Sydney or in New South Wales. So you have occasional rains. Yes, it can rain in any time of the year. What about the cold area, say snowfall or वो सब? Because you live all Australia's population is near the coast, so I just wanted to understand कि कहीं Correct. इतना ठंडा है जैसे कश्मीर में या हम हिमाचल में स्नोफॉल देखते हैं. Yes. So there are areas जिसे स्नोईज कहते हैं यहाँ पे. So वहाँ पे snowfall होता है and where people go for skiing. So but on the coastal it's inland for obvious reasons. So ocean front areas में generally more different. Okay, now I just like to understand one thing कि as we all know you all live towards the coastal area of the. What about the deserts in Australia? Is government planning something कि वहाँ पे भी लोग जाके बसे, because बहुत सारा लैंड मास वेस्ट हो रहा है, as we know बहुत कम लोग रहते हैं. Waste is probably it's not utilized because the population, to be very honest, है ही नहीं इतना, right? अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन इतना है जितना मुंबई का पॉपुलेशन है. तो मतलब पॉपुलेशन ही है नहीं तो फिर व्हाट विल यू डू, राइट? यू कांट फिल अप द कंट्री विद पीपल अगर है ही नहीं, लोग ही नहीं है. बट इट इज अ लाइफस्टाइल चॉइस. लोगों को पानी के पास ही रहना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल. तो पीपल, that is how the country evolved, right? The development started from the, और ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं रहता बीच में. there are certain smaller tier 3 cities सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, बट बहुत कम है. वहाँ पे टूरिज्म है, माइनिंग है, मेनली यही 2 सेक्टर्स है जो that keep those central areas. What about the main vegetation, say food on, do you get mangoes there? Simple. You have. Okay. Yes. What about the kangaroos, where they are found? They are only in jungle areas or what is? How do you find them? I think it's थोड़ा एक मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं इंडिया लोगों को लगता है हर एक के बैकयार्ड में कैंगरूज होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बट यस, वॉलबीज और कैंगरूज थोड़ा सा अर्बन एरिया से थोड़ा अगर बाहर निकले तो you will start to see them when you're driving on freeways. So basically it is a wild animal, kangaroos. They are not. Okay. Got it. So Sachin, it was fantastic talking with you. Lastly, I would like to ask you कि given a chance, would you come back to Mumbai? Because your experience would be more appreciated in Mumbai. कि वहाँ पे आपने जो सीखा वो मुंबई में implement करने को मिलेगा.
Look, the answer is yes. I can always, I've never left Mumbai. Mumbai is always in my heart, right? So, हमेशा आना जाना होता है, and I absolutely love India. I absolutely love Mumbai. So, my answer is yes. But हमेशा के लिए नहीं. But I can always have a practice here, which can, open up. You never know the possibilities. I can do work. कहीं ग्लोबल जमाना है, हम यहाँ बैठे कहीं का भी काम कर सकते हैं. Open for work from India as well. Okay, so how can we get in contact? Say developers जिनके पास ये वीडियो जाएगा, how will they get in contact with you? I guess you can plug in my contact details in your video, and they can contact me. Yeah. Okay, that you can later figure out, site visits and everything. Okay, how do you see the progress of Mumbai? As I know, you were maybe a month back, you were in Mumbai. So lastly, I would like to again ask one thing. How do you see the progress in architectural terms and other infrastructure-wise terms in at least suburbs of Mumbai and mainline Mumbai? Look, I think it's astonishing. I'm thoroughly impressed with what I am seeing every time I come to Mumbai. Last year, I came to Mumbai, I think 3 times in a year, which was, India में जो काम हो रहा है, it's happening at a mind-boggling scale. जो मतलब आप अभी वापस, I'll give you an example. मुंबई का population ही इतना है जितना पूरे ऑस्ट्रेलिया का है. So वो स्केल अलग ही है हर एक प्रोजेक्ट्स का. तो आई एम thoroughly impressed कि जैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, मुंबई में, अदर मेट्रो सिटीज में. I am impressed with the kind of work that India is doing, and absolutely would love to be a part of that. And looking forward to work with you. Thank you. तो होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल कितनी अलग है दोनों, और उनके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन मूल्य कैसे हैं. ऐसे ही डिजाइन रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए अनडिजाइन को. थैंक यू.